Assalamu alaikum, I am Mahir Amin and the topic I am going to present today is graph traversal, BFS and DFS along with my group member Zunair Iqbal. Data structures used in these both are stack and queue. First of all, we'll learn something about stack. Stack is used for depth first search that works in last in first out order. Push and pop. Push adds an item in the stack. If the stack is full, then it is said to be an overflow condition. And pop removes an item from the stack. The items are popped in the reversed order in which they are pushed. That's why it is called last in, first out. And if the stack is empty, then it is said to be an underflow condition. Now peak or top function returns is the most top element in the stack. As here is 5, then it is the most top element, so peak will or top will return as this. And is empty function checks if the queue is empty or not. So the queue data structure is used for breadth first search. As you can see here, the element is inserted from one end called the rear, means from the back or the tail here, and the front, the removal of existing element takes place from the other end, that's called front. When we will enqueue an element in the queue, that means when we will insert an element into the queue, it will be inserted into the back, and when will we dequeue the element from the queue, then it will be removed from the front. Now let's come to the main point, that is breadth first search. As the name suggests, breadth first search is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structures. It starts at the tree root or some arbitrary node of a graph called vertex, and sometimes referred to as search key, and explores all the neighbor nodes, all the that are present depth prior to moving on to the nodes at the next depth level. It uses the opposite strategy of depth first search. So as you can see in the flowchart, we can see in the flowchart that first of all it will start, then label start cell, that is vertex is equal to 0, I is equal to 0. Then it will check that is there any adjacent cell in the graph. If yes, then it will go for the next. For each cell labeled I, label all the unlabeled adjacent cells with I plus 1. It works as visited labels and the elements in the queue. But if there is no adjacent cell, then it will go to the stop. Breadth first search checks whether a vertex has been discovered before enqueuing the vertex rather than delaying this check until the vertex is dequeued from the queue. So here, as you can see, here are 5 elements present in the graph, 0, 1, 2, 3, 4, and we have 2 categories here. One is the queue and one is the visited category. So next we will start from 0, and then we will see what are the adjacent cells from 0. So here are 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 will be inserted into the queue, and 0 will be inserted into the visited. 1, 2 and 3. Now where is the next cell? That will be 1. So as we have visited 1, it will be removed from the front of the queue and will be inserted into the visited. Then the next element in the queue is at the front is 2. Then 2 will be removed from the queue, that is dequeue, and it will be inserted into a visited category. Then 3 is the next cell that will be removed from the queue and it will be inserted into the visited category. As you can see that here, when we visited the 2, the next adjacent cell is 4, so 4 will be inserted into the queue, that is enqueue. Then the next 3 will be removed and it will be inserted into visited. Then we have only one cell left here in the queue, that is 4, so 4 will be removed from the queue and inserted into visited. Now it will check whether the queue is empty or not by using is empty function. As the queue is empty, so it will stop the function. The time complexity can be expressed as big O of v plus e, since every vertex and every edge will be explored in the worst case. V is the number of vertices and e is the number of edges in the graph. Note that OE may vary between 0, 1 and O, between big O of 1 and big O of
As you can see here, here's a slightly difference between these two lines. So why is it? It is can be because of some issue like RAM issue, etc. So now let's discuss the application of breadth first search. It can be used in copying garbage collection data channels algorithm, finding the shortest path between two nodes U and V with path length measured by number of edges. And it can be used for construction of failure function of a Hokorsic pattern matcher and testing and implementing parallel algorithms for computing a graph's transitive closures. So that's all for running time complexity and BFS, and now let's check the code. Thank you. Here's the code for printing BFS traversal from a given source vertex. सबसे पहले हमने ग्राफ नाम की एक क्लास बनाई है, उसमें इंटीजर v हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट करने के लिए डाटा टाइप उसकी इंटीजर है डिक्लेयर करवाया है वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर हैं और एक क्यू हमने डिक्लेयर करवाई है इंटीजर डाटा टाइप की। अब यहाँ पे हमने कैसे हमें पता चलेगा कि डी क्यू वेरिएबल होगा या नहीं? लूप चेक करेगा वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी देन एस इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। अब एस में क्या वैल्यू चली गई है? जो क्यू के फ्रंट पे पड़ी हुई है वो वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, और जो क्यू का फ्रंट होगा उसको हम पॉप करवा देंगे। मतलब पॉप करवा देंगे मीन्स क्यू एम्प्टी हो जाएगी। ये लूप तब तक चलेगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। और ये सारे जो एडजेसेंट वर्सेस हैं उनको लेगा, कैसे लेगा? डी क्यू से उनको रिमूव करवा देगा इन वर्टेक्स एस। और इफ़ एडजेसेंट हैज़ नॉट बीन विजिटेड, अगर कोई एडजेसेंट विजिट ना हुआ तो उसको उसने विजिटेड मार्क करना है और एन क्यू कर देना है। सो हियर इज़ द मेन ड्राइवर फॉर आवर कोड, जहाँ पे हमने एड एज फंक्शन यूज़ करके एजेस ऐड करवाए हैं एजेस ऐड करवाए हैं 0 1 0 2 0 3 1 2। ये हमारे पास बता रही हैं कि एडजेसेंट सेल्स कौन कौन से हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास फॉलोइंग इज अ ब्रेड फर्स्ट ट्रावर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 2 से जो ब्रेड फर्स्ट ट्रावर्सल थी वो ये आ रही है 0 1 2 3 4 एंड टाइम टेकन बाय दिस प्रोग्राम इज 6। थैंक यू। And my topic is depth first search. In depth first search, the standard implementation of depth first search is comparison of two categories. One is visited and one is non-visited. DFS algorithm works as follows. Start by putting any of the graph vertices on the top of the stack. The step number 2 is take the top items of the stack and add it to the visited list. Step number 3 is create the list of that vertex at the adjacent node. Keep repeating step 2, 3 until the stack is empty. So now I have moved 0 in the visited list as I have considered 0 as the first element to the traversed. Now I have moved 3, 2 and 1 in a sequence in the stack, and we will visit these nodes one by one in the depth sequence. Now we have visited 1 and we popped it from the stack and moved it to the visited list. Now we have visited 2 and put it to the visited list. We popped 2 from the stack and moved it to the visited list. Now there is an unvisited vector 4 with 2, and now we are visiting 4 and we put it into the stack. We have visited 4 and popped it from the stack, and now we moved it to the visited list. And now now all the nodes are traversed in the depth wise, and we have put all the vertex in the visited list, and the sequence is 0 1 2 3 4 and 3. Now the stack is empty and there are no nodes to be traversed.
Here I am showing the running time complexity of DFS algorithm. The red line is the experimental time and the blue line is theoretical analysis. There's a difference between both because of the environmental setup. There is the RAM issues and many more environmental issues which causes these implementations. Thank you. अब हमारे पास डीएफएस का एक प्रोग्राम है। हमने इसमें ग्राफ की क्लास बनाई है, उसमें हम लोगों ने वर्टिसेस को डिक्लेयर किया और एक एडजेसेंट लिस्ट बनाई है और हम लोगों ने एक डीएफएस यूटिल का प्रोग्राम बना दिया है जो कि स्टैक में पुश करवाएगा और विजिटेड में मूव करवाने के लिए एलिमेंट्स को इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ का एक फंक्शन बनाया है जो कि पब्लिक है, पब्लिक फंक्शन है और उसमें हमने v यानी कि वर्टिसेस पैरामीटर को पास करवाया है और ये सिर्फ डिक्लेरेशन है और डिफाइन आगे होगा। और हम लोगों ने ऐड एच का एक एड्रेस डिक्लेयर करवा लिया है। ऐड एच का एड्रेस डिक्लेयर करवाने के लिए फंक्शन बना दिया और उसके बाद हम लोगों ने डीएफएस इंट वी हम लोगों ने स्टार्टिंग नोड और उसको देने के लिए एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ के फंक्शन में डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास नोड्स कितने होंगे और इसमें हमने नोड्स एज अ पैरामीटर पास करवा दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टिंग में वी को पॉइंट ये यहाँ पर वी को पॉइंट कर रहा है और इसकी स्टार्टिंग वर्टेक्स को और उसके बाद हम लोगों ने न्यू लिस्ट बनाई है नेक्स्ट वर्टेक्स के लिए। और फिर उसके बाद डीएफएस यूटिल का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने उसका काम ये है कि वो स्टैक को पुश करेगा और उसके बाद विजिटेड में मूव कर देगा। उसके बाद अगर वो विजिटेड हो चुका है तो वो वी को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा और अगर विजिटेड नहीं हुआ कोई एलिमेंट तो वो दोबारा से अगेन स्टैक में पुश करेगा और उसके बाद उसको वहाँ स्टैक से रिमूव करवा कर इसको विजिटेड में पुश कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डीएफएस का जो फंक्शन है वो फर्स्ट नोड देगा एज अ पैरामीटर कि हमने कौन सी नोड से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने एक मेन का फंक्शन बना दिया है जिसमें हम लोग 5 एड एजेस दे रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने ये 5 एजेस दिए हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइम का एक फंक्शन बना देंगे। टाइम का एक फंक्शन बना दिया है और उसके बाद वो फंक्शन को कॉल कर देगा कि स्टार्टिंग नोड देकर और यहाँ पर 0 जो है ये हमारे पास हमारा स्टार्टिंग नोड है और हम लोगों ने यहाँ पर टाइम के फंक्शन को एंड कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास जो ट्रावर्सल है डीएफएस का वो 0 1 2 4 3 है, जैसे कि हम लोगों ने ये स्लाइड्स में भी बताया था कि डीएफएस का ट्रावर्सल 0 1 2 4 3 है और इस डीएफएस का ट्रावर्सल को जो टाइम लगा है वो 0.000205 है और जो इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो 0.1332 है। Thank you so much for listening.